All right, who's there now? Ifra, is that you? Aruj. Good afternoon, Aruj. Better call others. You can inform others to come online. I'm going to start this. I'm going to revise ICU. ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल तक हमने इसको स्टॉप किया. ठीक है, इन्फेक्शन इन ICU एंड सर्जिकल ICU का हमने इन्फेक्शन पढ़ लिया था. So I'm going to stop till there, and from today onward I'm going to revise. ठीक हो गया? So plus for tomorrow, I'm going to upload some questions, and you need to answer it. All right. So can you hear me, beta? Just let me know if you can hear me. Yes or no? Just let me know. Mention it. Timings. Forget the timings. Just let me know you can hear me. जी मैम. ओके. सो कल का काम हम कल देखेंगे. आज हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है. बी वेरी अटेंटिव. You don't know whatever I am revising can come in your paper. So be very attentive. Assalamu alaikum. Walaikum salam, beta. Now I'm going to start my topic. Today's I'm going to start from very start, and that's the historical perspective of critical care, which we have already done. We are going to revise the rest of the presentations, right? So, historical perspective of critical care is it begins as a component of recovery room. Okay, it was first this critical care was started as recovery room, and from recovery room it turned into ICU. Okay, before expanding into coronary care unit in 1960s, the American Association of Critical Care Nurses was organized in 1969. So it means that it was expanded in 1960. ठीक है, 1960s में थे जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए, right? And then American Association ने critical care को और क्या किया, expand किया in 1969. So it took 9 years. And then a competency-based examination was developed in 1975 to provide certification in critical care nursing. Certification is valid for 3 years. ठीक है, इनकी certification क्या थी? 3 years के लिए valid थी और available for adult, neonatal and pediatric notification. The AACN developed standard of nursing care of the critically ill in 1981 to explain the role of critical care nursing in ensuring quality care for critically ill patients and their family. So in a whole, you can just see that how it was developed. It was developed in 1960s, और फिर उसकी जो अमेरिकन एसोसिएशन ने क्रिटिकल केयर नर्सेस के लिए जो ऑर्गेनाइज किया वो 1969 में किया, और फिर इसकी मजीद डेवलपमेंट 1975 में हुई, जिसकी सर्टिफिकेशन वाज फॉर 3 years in adult, न्यूनेटल और पीडियाट्रिक में. ठीक है. सो ये इन्होंने अभी फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात की है. Now, what are the roles and responsibility of a critical care nurse? Nursing इनकी क्या है? So, roles and responsibility of critical care nurse में
आप देख सकते हो, दे आर द केयर प्रोवाइडर्स, दे आर द एजुकेटर्स, दे आर द मैनेजर एंड दे आर द एडवोकेट। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि केयर प्रोवाइडर जो है उसका काम क्या है, उसका काम है दे प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव and highly technical direct care to the patient and family in response to the life-threatening health problems. So, जो care provider है, उसका काम है to provide comprehensive at time highly technical, किस किस्म की technical काम होते हैं, like the रेस्पिरेटर है, मॉनिटर्स हैं, और क्या कहते हैं, आईवी ट्यूबल्स का जो ड्रॉप सेट करते हैं, क्या कहते हैं उसको आप लोग, ठीक है, वो सारा ये क्या है, ये हाईली टेक्निकल है, और ये किसका काम है, द केयर प्रोवाइडर का काम है। देन शी इज अ एजुकेटर, ठीक है, सो एज एन एजुकेटर शी प्रोवाइड्स व्हाट, पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो तो इन सब के अंदर ही जवाब मौजूद है। ठीक है, केयर प्रोवाइडर के अंदर जवाब मौजूद है, एजुकेटर के अंदर, मैनेजर के अंदर और एडवोकेट के अंदर। सो एजुकेट का एजुकेटर है वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगी पेशेंट को भी और फैमिली को भी। ठीक है, ऑन देयर लर्निंग नीड्स एंड एबिलिटीज, ऑन द severity of the situation, right? And the needs and ability allows the patient to assume more responsibilities for meeting healthcare needs, and this condition stabilizes or improves. अब अगर उसकी जो हालत है पेशेंट की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि वो उस उन नीड्स को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, एंड देन कम्स द मैनेजर। Now, what is the role of a manager? It coordinates the care provider by various health workers to provide optimal nursing care to the critically ill patient. अब अगर देखा जाए तो जो मैनेजर है वो कोऑर्डिनेट करता है मुख्तलिफ दूसरे हेल्थ वर्कर्स के साथ, ताकि बेहतर से बेहतर नर्सिंग केयर क्रिटिकली इल पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा सके। ठीक है क्या, फिर आ जाता है एडवोकेट। शी इज एन एडवोकेट, ही और शी बोथ, ठीक है, प्रोवाइड्स द पेशेंट्स राइट, पेशेंट की राइट के लिए दे बिकम्स एन एडवोकेट, उनकी राइट के लिए वो फाइट भी करते हैं। यहाँ तक आगे समझ में? ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ क्रिटिकल केयर नर्स? ये देखो नर्स बैठ के डिसीजन का फंक्शन रोल अदा कर रही है। Assess and implement treatment for patient and patient response to life-threatening health problems। ठीक है, असेस करती है, इम्प्लीमेंट करती है, ट्रीट करती है पेशेंट के उन रिस्पॉन्सेस को जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, किस लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, जो हेल्थ केयर के लिए थ्रेटन्ड है उसके लिए वो असेस करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, ट्रीट करेगी। Provide direct measures to resuscitate if necessary। अब अगर पेशेंट अगर किसी वजह से अपनी ब्रीदिंग होल्ड कर लेता है या किसी वजह से वो रेस्ट में चला जाता है, तो उसमें नर्स का पूरा फंक्शन है, उसका पूरा रोल है कि वो रिससिटेट कर सकती है पेशेंट को। ठीक है, शी हैज द राइट टू रिससिटेट द पेशेंट जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता। Uses independent, dependent, and interdependent interventions to restore stability, prevent complications, achieve and maintain optimal patient response। ठीक है, अब नर्स क्या करती है, शी यूजेस इंडिपेंडेंटली काम करती है, डिपेंडेंटली भी काम करती है,
और इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशंस भी करते हैं। ठीक होगा। सो और ताकि वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम कर सके। Now let's see. Okay, she provides health education to the patient and family, supervise the patient care and ancillary personnel, and support patient adaptation, restore health, preserve, and the patient's right includes the right, including the right to refuse the treatment. ओके। अब इसमें वो क्या करती है, एक तो उसने एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया पेशेंट को और फैमिली को, सुपरवाइज किया उसने पेशेंट केयर को, और फिर उसने उसके पास सपोर्ट किया पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उसके जो राइट्स हैं, इंक्लूडिंग द राइट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, इंक्लूडिंग द राइट टू रिफ्यूज treatment. She has the right. ठीक हो गया? This is the legal issue affecting the provision of the critical care. इसमें acute care आ जाती है, emergency care है, urgent care है, short term stabilization. Short term stabilization is in a very short time जिसमें हम short term goal और long term goal care plan में बनाते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल में आप कम से कम टाइम में आप कितना पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, आप उसको किस तरीके से, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है डिस्निया के साथ, ठीक है, एस्थमा अटैक के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, इन शॉर्ट टर्म यू स्टेबलाइज क्या करोगे, यू डेफिनेटली यू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। इसमें डिस्निया में क्या हो रहा है, सबसे फर्स्ट काम क्या है, शी कांट ब्रीथ, ही और शी पेशेंट कांट ब्रीथ, सो व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, आप उसको जल्दी से ऑक्सीजन स्टार्ट करो। अब ऑक्सीजन अगर आप उसको लटा के स्टार्ट कर रहे हो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सो पोजीशनिंग भी बहुत जरूरी है, पोजीशन को ठीक करने से भी पेशेंट की ब्रीदिंग शॉर्ट टर्म में आप बेहतर कर सकते हो। राइट, सो क्या हो गया कि आपने पेशेंट की शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजिंग में आपने उसको ऑक्सीजन स्टार्ट किया, आपने पेशेंट को उसकी पोजीशन को अपराइट पोजीशन किया, आपने उसको नेबुलाइज किया, आपने उसको इमरजेंसी मेडिकेशन जो देनी है वो आपने डॉक्टर के मुताबिक शॉर्ट टर्म में आपने उसकी ब्रीदिंग संभाल लिया। Now patient can breathe easily. So that the short term में आपने उसका acute care कर लिया। प्री हॉस्पिटल केयर में आपने उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले पहले आपने उसके लिए क्या काम किया, ठीक है, आपने उसकी कंडीशन को कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट इज ब्लीडिंग, आपको जल्दी से कोई कपड़ा रख पैड रख के उसको अच्छे से क्या कर दिया, बैंडेज कर दिया। Then we bring patient to the critical care, trauma care, acute care, surgery में जो जो कुछ भी है वो आपने उसको संभाल लिया। That is the legal issue. Now comes the legal issues affecting the provision. इसको कंटिन्यू किया हमने, हमने देखा आपने जो जो लीगल इश्यूज हैं वो क्या अफेक्ट करते हैं, नेग्लिजेंस, मैल प्रैक्टिस, इनफॉर्म ये लिखा है मैम, sorry for late. Okay, better we have just started and this topic is important because I've started from the very start and probably इनमें से ही कुछ बातें आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, so you need to be very attentive. You have your critical and emergency केयर की जो बुक आप लोगों ने फोटो कॉपी करवाई थी बेटा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, कुछ बातें आपको उसके अंदर से मिलेंगी, कुछ किताबों कुछ आपके पास जो मिस
राफेल ने आपको बुक कही है, बोथ आर क्रिटिकल केयर, ठीक है। सो आप उनको भी देखो। उस ये जो प्रेजेंटेशन आपको अभी इस वक्त मिल रही है, दे आर ऑल इन योर बुक, द वन विच यू हैव फोटो कॉपी, द वन विच आई गेव यू। समझ में आ रही है? तो ये वो प्रेजेंटेशन है जो उसमें से मैंने देख के बनाई है। तो आप परेशान नहीं होना कि ये जो बुक है, ये कहाँ से प्रेजेंटेशन आ गई है। ये वही प्रेजेंटेशन है जो आपकी बुक के अंदर लिखी है, वहीं से मैंने टाइप किया हुआ। गुड हो गया? सो डोंट गेट नर्वस कि भाई कहाँ से आ रहा है क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको उसी में से मिल जाएंगे। देन कम्स द इम्प्लाइड कंसेंट है, एडवांस्ड डायरेक्टिव इंक्लूडिंग ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड लिविंग विल्स, ठीक है। एंड ये एड नहीं है, एंड लिविंग विल्स, ये जो लोग क्रिटिकली इल होते हैं और अपनी वसीयत लिखना शुरू कर देते हैं, ये उसकी बात हो रही है। नाउ कम्स कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ठीक है। अब इसकी दो डेफिनेशंस है, आपको जो अच्छी लगती है आप उसको अच्छे से याद रखो। क्रिटिकल केयर nursing is that specialty within nursing that deals specifically with the human responses to life-threatening problems। बेटा एक मिनट, मैं जरा ये फैन ऑफ करूं ताकि आप लोगों को उस पंखे की आवाज आएगी। ओके, दिस इज ओके ना? आवाज कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई। सो द क्रिटिकल, एक डेफिनेशन आ जाती है कि ये एक नर्सिंग जो है एक ऐसी स्पेशलिटी है जो कि स्पेसिफिकली जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसके लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स के को डील करता है, ठीक है। उसको उसके रिस्पॉन्स में उसको ट्रीट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल केयर नर्सेज इज लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स। अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को एक आईसीयू नर्स का वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। आप लोगों को एक डिप्लोमा मिल जाएगा कि यू आर अ लाइसेंस क्रिटिकल नर्स विच हु आर रिस्पॉन्सिबल for ensuring that acutely and critically patient and their families receive optimal care, ठीक है। ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उसके फैमिलीज को भी ऑप्टिमल केयर मिलेगी रिगार्डिंग बीइंग क्रिटिकली इल, ठीक है। ओके, now this is how they take history. Okay, definition of critically ill patient. Critically ill patients are defined as those patients who are at risk, ठीक है। ये वो हैं जो कि रिस्क पर हैं फॉर एक्चुअल या पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स के। नाउ क्रिटिकली इल पेशेंट जो है इज द मोर लाइकली ही और शी इज टू बी वल्नरेबल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो पेशेंट है ये वल्नरेबल है किस चीज के, अनस्टेबल एंड कम्प्लेक्स, thereby requiring intense and vigilant nursing care। अब इनको इस चीज में इस विजिलेंट नर्सिंग केयर की यानी कि क्रिटिकली इल पेशेंट को एक स्पेशलाइज्ड केयर की सख्त जरूरत है, ठीक है। अब नर्स क्या करती है, क्रिटिकली इल नर्स क्या करती है, ठीक है। नाउ आई लाइक दिस पिक्चर एक्चुअली। Why do I like this picture? Because in this picture, you can see that there is nurse and patient की eye contact है,
And then, there's a smile on the patient, on the nurse's face. Okay? The smile conveys the communication. ठीक हो गया? So this is how you, अब ये इसने बुसुरा बुसुरा सा मुंह बनाया होता, तो ये सम्मा के चेहरे पे कभी भी मुस्कुराहट ना आ रही होती। ठीक हो गया? So it's very important that your communication needs to be not only verbally, but by not even by your gestures also you can communicate. ठीक है? सो क्रिटिकली जो क्रिटिकल नर्स है वो अपने प्रैक्टिस इन सेटिंग में पेशेंट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स assessment, high intensity therapies and interventions, and continuous nursing vigilance. Critical care nurse rely upon specialized body of knowledge, skill, experience to provide care to the patient and family. And they create environment that are healing, humane, and caring. So, this lady, she's conveying the whole message, right? Humane and caring का पूरा message वो convey कर रही है. Plus, she is also assessing the patient, right? हो गया? That's what she do. And foremost, उसके अलावा उसने कहा कि वो क्या करती है? Care nurse is a patient advocate. अमेरिकन एसोसिएशन जो है वो डिफाइन करती है एडवोकेसी रिस्पेक्टिंग एंड सपोर्टिंग द बेसिक वैल्यूज, राइट्स एंड बिलीव्स ऑफ अ क्रिटिकली इल पेशेंट। अब वो क्या करती है, वो ना सिर्फ वो केयर करती है बल्कि शी इज एन एडवोकेट ऑल्सो। शी रिस्पेक्ट, ठीक है, वो पेशेंट की रिस्पेक्ट करती है, अपने पेशेंट की बेसिक वैल्यूज को सपोर्ट करती है। उसके बेसिक वैल्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? उसके बेसिक वैल्यूज हो सकते हैं जैसे अगर वो मुख्तलिफ मजहबों से अगर पेशेंट ताल्लुक रखता है तो उसके मजहब को भी वो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देती है, उस पेशेंट को एज अ पेशेंट समझती है, उसके लिए मजहब और ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पेशेंट मायने रखता है। सो दैट्स द सपोर्टिंग बेसिक वैल्यूज, द राइट्स एंड बिलीव्स ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट। उसने एज ए बिलीव कि वो उसका पेशेंट है और उसने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है कि वो उसकी केयर कर सके। इन दिस रोल क्रिटिकल केयर नर्स क्या करेगी? रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट द राइट ऑफ द पेशेंट और द पेशेंट्स designated surrogate or to autonomous informed decision making। इस डिसीजन मेकिंग में भी वो पूरा साथ देती है। इंटरवीन व्हेन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट इज इन क्वेश्चन। अब वो इंटरवीन करती है, उसमें दखल डालती है, उसमें बेस्ट इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पेशेंट के, वो क्या करती है? शी डज अ बेस्ट, ठीक है, ताकि वो उसके पेशेंट के लिए कोई भी क्वेश्चन अराइज हो जाए वो अपने पेशेंट के लिए लड़ती है, उसके लिए कहा, उसके बाद उसके लिए उसके हर मुमकिन साथ उसके उसको उसको वैल्यू देती है। हेल्प द पेशेंट ऑब्टेन नेसेसरी केयर। Respect the value, belief and right of the patient, मैंने बता दिया करती है। Provide education and support to help the patient or the designated surrogate mother makes a decision। ठीक है, अब वो क्या करती है? वो उसके एजुकेशन को सपोर्ट करती है ताकि वो उसको जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट है डायबिटिक है, उसको वो कैसे एजुकेट करेगी? उसको एजुकेट करेगी ताकि वो उसको कैसे इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, किस तरह यूनिट फिल करना है,
कितने यूनिट फिल करना है, तो वो एकांश रेंज में ही उसको डेमोन्स्ट्रेट कर करके बताएगी, और फिर देन शी विल लेट द पेशेंट टू फिल द syringe, तो उससे भी उसको पता लग जाए. So this is how she educate the patient. इसके अलावा वो क्या करती है कि जैसे डाइट है, डाइट के बारे में वो पेशेंट को हेल्प करेगी. ठीक है कि किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए, जो डायबिटिक है, जो रीनल को है, जो जहाँ कहीं के भी है, वो क्या कहते हैं उसके थोड़ा सा उसकी किस तरीके से उसकी हेल्प करेगी. Then support the patient or the designed surrogate or transfer care to the equally qualified nurse. ओके, अब अगर सपोर्ट करेगी उस डिसीजन को, अगर पेशेंट को क्या किया है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी वो क्या करेगी, इक्वली क्रिटिकल जो क्वालिफाइड क्रिटिकल केयर है, जैसे आप लोग एक दूसरे को ओवर देते हो, इंचार्ज को ओवर देगी, जो स्टूडेंट है स्टूडेंट को ओवर देंगे, और क्या कहते हैं जो स्टाफ नर्सेस को, तो वो उस लेवल पे क्या करते हैं, आप जो क्रिटिकल क्वालिफाइड क्रिटिकल केयर नर्स है, वो इक्वली पेशेंट अगर ट्रांसफर होता है तो उसको वो सपोर्ट करते हैं, उसको वो उसकी ओवर में उसके ट्रांसफर में जो भी कुछ हुआ उसके लिए वो उसको बताएंगे. Then intercede for patient who cannot speak for themselves. उन लोगों की जुबान बन जाती है वो जो बोल नहीं सकते, जो बता नहीं सकते कि भी. अब जैसे आप लोग अपने रिलेटिव्स में से किसी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, तो वो पेशेंट खुद से कुछ भी नहीं बोलता, आप डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि मुझे ये कुछ पेशेंट को ये होता, हमने इसके लिए ये किया, हमने इसके लिए ये मेडिसिन दी, हमने इस डॉक्टर को दिखाया, हमने फलां डॉक्टर को दिखाया, इस हॉस्पिटल लेकर गए. तो आप क्या करते हो, अपने मरीज के लिए बोल रहे होते हैं, ठीक हो गया. तो इसी तरीके से जब नर्स होती है और वो पेशेंट जो अपने लिए कुछ बोल नहीं सकता, आप क्या करते हो कि आप उसकी जुबान पर जाते हो, आप उसके लिए बताते हो, मॉनिटर करते हो, safeguard the quality care of the patient receives, then you monitor the patient. ठीक है, आप उसको मॉनिटर करते हो, उसको सेफगार्ड द क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हो. Act as a liaison between the patient, the patient's family and the healthcare professionals. ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि you act as a liaison between the patient. Role of a critical nurse में you nurse work in a wide variety of setting. बेटा आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है या पीछे से ज्यादा शोर आ रहा है? प्लीज मुझे बात So next step, identify and assemble the articles required for the registration. So आपने सबसे पहले identify करें what is required and then assemble the articles. Second article जो required है for the registration. To ensure that all the articles are incorporated or very आपको पता चला जैसे फॉर एग्जांपल आपको फैक्टर को साथ में ब्लैक नहीं आप प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन स्टार्ट कर पता चला फैक्टर को भी परमिशन नहीं है. So it's letting me know if you can hear me clear without discussing. Okay. Now, this bedside है जो wide varieties of settings है, ठीक है, filling many roles. अब नर्स जो है वो बहुत सारे रोल्स को फिल कर रही है, जैसे कि she becomes a bedside clinician, a nurse educator, she becomes a nurse researcher, a nurse manager. Very noisy.
Abira, बेटा can you please slow down the fan क्योंकि स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनको पीछे से बहुत नॉइज आ रहा है. Thank you. Okay. Okay. With anybody going to teach? मैम बहुत शोर आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. क्या अभी आ रही है? मैंने अभी पंखा थोड़ा सा स्लो किया बेटा. अभी आवाज आ रही है आपको? Okay. Okay. Now including the she is a bedside and researcher है, nurse manager है, clinical है, जिम है. अब ठीक हो गया? Okay. Nurse practitioner. She's a specialist and she's a practitioner. With the onset of managed care and the resulting migration of patient to alternative setting, critical care nurse are caring for patients who are more ill than ever before. अब इसमें उसने बताया है कि जो जो नर्स है, जो क्रिटिकल नर्स है, वो क्या करती है उन पेशेंट्स की जो ऑल्टरनेटिव सेटिंग्स में आए हैं, ठीक है, अब एक सेटिंग से यानी कि पहले वो वार्ड में थे और अब वो क्रिटिकल आईसीयू में चले गए, तो वहां पर वो क्या करती है नर्स, वहां पर क्या करेगी, वो केयर करेगी जो कि बहुत ज्यादा बीमार है. पहले बीमार तो वो उस वक्त भी थे जब वार्ड में थे, लेकिन अब ज्यादा बीमार हो गए हैं और वो आईसीयू में आ गए, तो वहां पर उनको ज्यादा केयर की जरूरत है. सो उनको वहां पर केयर, जो स्पेशल केयर दी जाती है वो देंगे. दैट्स हर रोल इन आईसीयू. ठीक है. A CNS is an expert in the particular specialty. ठीक है. अब ये जो नर्स है जो clinical nurse जो है, it will care in this case. The CNS is responsible to identification, intervention, management of clinical problems to improve care for the patient and family. अब ये जो अबीरा अबीरा उसकी आवाज बहुत ऊंची है. Still your voice is going to match up with the speaking on your back. वो तो कोई और क्लास ले रहा है ना, किसी की भी क्लास ले. मुझे नहीं पता, ये मेरे साथ झगड़ा करने बैठ गई है. उनको आसान से बोल दो कि फिर स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे, थोड़ा सा आवाज नीचे कर, तो थोड़ी सी आवाज कम करने. मैंने कहा तो उसने झगड़ना शुरू कर दिया. ठीक है. सो ये जो क्लिनिकल नर्स है उसने उसने कहा कि जो ठीक है, दे प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर इंक्लूडिंग असेसिंग, डायग्नोसिंग, ये यहाँ पे केयर प्लान आ गया आपका, फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकली एंड नॉन ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. सो वहाँ पर वो पेशेंट को ये डायरेक्ट केयर देंगे. आईसीयू में क्या हो जाता है, यू मेक अ प्लान. ठीक है. और उस प्लान में क्या करते हैं फिर आप एक प्लान बना के काम करते हैं जिसके अंदर आपके पास वो पांचों बातें आ जाती हैं, जिसमें आपकी असेसमेंट है, आपके डायग्नोस है, प्लानिंग है जिसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आ जाती है, और फिर आपकी इंटरवेंशन है, और
वैल्यूएशन है, ठीक है। सो यू मेक अ प्लान एंड देन यू वर्क। अब इन जो क्रिटिकल केयर सेटिंग के अंदर यू फोकस मेकिंग क्लिनिकल डिसीजंस रिलेट्स टू कॉम्प्लेक्स पेशेंट केयर, ठीक हो गया। आप यहाँ क्या करते हो, यू मेक अ एक सेटिंग में आप फोकस करते हो और देन यू मेक अ, वही बात है जो कि हमने भी पहले की थी, यू मेक अ प्लान एंड देन यू वर्क। देयर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिस्क appraisal, interpretation of diagnostic tests and providing treatment. Now, you cannot treat the patient unless you go for the diagnosis. Okay? When once the diagnosis is made, diagnostic test is done. Diagnostic test से आपकी diagnosis बन जाती है। ठीक है। जब हम लोग कहते हैं, हम लोग बहुत बुड़बुड़ करते हैं, इतने बहुत सारे टेस्ट करवा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, दैट्स फॉर आवर गुड ओनली। हम माना कि ये जरूरी है फर्स्ट डायग्नोस करने के लिए, फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, विच में इंक्लूडिंग द प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। फिर उसके मुताबिक आपकी मेडिकेशन शुरू होती है, हवाई बातें नहीं होती, ठीक है। द क्रिटिकल केयर जो है उन्होंने कहा कि हैज ए लीगल ड्यूटीज फॉर क्रिटिकल केयर नर्सेस। अब क्रिटिकल केयर नर्सिंग में एक लीगल ड्यूटीज है, ठीक है। उस लीगल ड्यूटीज में ऑब्जर्व, नीड टू बी वेरी कीन ऑब्जर्वर, ठीक है। दूर से आपको देख के अंदाजा हो जाना चाहिए वेदर द पेशेंट इज ब्रीदिंग वेल और नॉट, ठीक है। उसके नेजल फ्लेयर करेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सो दैट्स योर ऑब्जर्वेशन। देन यू you assess in two ways. There is objective assessment and there is subjective. When you go for subjective, it is what patient tells you in his own word, ठीक है। वो अपने ही वर्डिंग्स में आपको बताएगा कि जैसे उसको हार्ट बर्निंग हो रही है या फिर गैस्ट्रिक बर्निंग हो रही है, तो उसको नहीं पता कि कैसे एक्सप्लेन करना है। तो अगर बहुत, हमारी एक डॉक्टर थी, डॉक्टर वाइट, कहती है इतने मैंने जिंदगी गुजार दी पाकिस्तान में, शी वॉज अमेरिकन, तो कहती है मैंने जिंदगी गुजार दी है पाकिस्तान में, लेकिन इनकी जुबान मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। अब वो क्या था कि ओपीडी में पेशेंट आया और आके बोलता है कि डॉक्टर जी मेरे अंदर पंप बढ़ रहा है, ठीक है। अब वो उसकी समझ में ना आई ये पावर क्या होता है, सच्ची बात है, तो मुझे भी नहीं था पता। ओके, अब ये पावर क्या चीज होती है, फिर जो साथ जो क्लिनिकल नर्स थी, उसने डॉक्टर को बताया, ओपीडी की जो नर्स थी, फिर उसने बताया डॉक्टर को पावर इज, उसको अंदर ऐसे लग रहा है जैसे आग जल रही है। तो डॉक्टर बड़ी हंसी, वो कहती है ये देखो, मैं क्या कहते हैं, इतने साल गुजारने पर भी मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। सो यू नो, यू असेस सब्जेक्टिवली भी आप देखते हो, और सब्जेक्टिवली पेशेंट ने पंबर कह दिया, ठीक है। अब उसको और कोई समझ में नहीं आया। नेक्स्ट उसने क्या कहते हैं, ये था सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में उसकी रेस्टलेसनेस को देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट इज नॉट, सो यू असेस, ठीक है। अब आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, यू असेस, देन कंडक्ट ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट। अब ये कंडक्ट ऑन गोइंग है, जो कि आपने काम किया और अब आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो कि जो उसको ट्रीटमेंट मिल रही है, आया उसको आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक हो गया। मैम नो वॉइस, क्यों नहीं वॉइस, अपना माइक ठीक करो। एक्चुअली बेटा साथ दूसरी क्लास भी हो रही है और जगह कोई नहीं है, और हमें इसी आवाज में काम करना है। आपको उसके साथ थोड़ा सा अपना माइक ठीक कर लो, आपको मेरी आवाज आ जाएगी।
ठीक है, एंड देन कम्स रिकग्नाइज सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब फिर वो जो इंफॉर्मेशन है उसको वो खुद से रिकग्नाइज कर लेते हैं, रिपोर्ट करते हैं, देन दे मेक अ प्लान, दे इम्प्लीमेंट एंड देन गोज फॉर एवेल्युएशन। ठीक है, एवेल्युएशन केयर में पेशेंट एवेल्युएट केयर में क्या आएगा, एवेल्युएट केयर में आएगा कि पेशेंट बताएगा कि मुझे आराम आया कि मुझे आराम नहीं आया, पहले से ज्यादा हो गया कि अब कुछ बेहतर है। ठीक है, सो दैट्स द इवैल्यूएशन। जब वो बता सकता है कि मेरे अंदर पापड़ बन रहा है, तो वो ये भी बता सकता है कि वो आग बुझ गई है, पापड़ बंद हो गया, अब कुछ ठंडक है। ठीक हो गया, सो ये है कि यू गो फॉर ऑन गोइंग उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो देखते हैं। एज ए केस मैनेजर यू नो हमने देख लिया कि एडवोकेसी एंड एजुकेशन है, क्लिनिकल केयर एंड कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेशन, कंटिन्यूटी, ट्रांसलेशन एंड मैनेजमेंट, परफॉर्मेंसेस हैं, आउटकम मैनेजमेंट है। ठीक है, साइको सोशल मैनेजमेंट है, रिसर्च एंड प्रैक्टिस है। ठीक है, दिस इज ऑल द रोल्स ऑफ अ केस मैनेजर, जो आपकी वार्ड की जो केस मैनेजर है वो करेगी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिव्यूज, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड देन शी मेक अ डिस्चार्ज प्लान। हो गया? हेलो, आर यू विद मी? रोनल, अस्मा, हेलो, कैन यू हियर मी? एक बच्चा फिर गायब हो गया। तो ये जो कंटिन्यूटी एक ही चीज आ रही है बेटा, इसको रख लो। आपके बहुत सारे नर्सिंग केयर में इसका रोल आ जाएगा। नाउ एट द एंड हम कंक्लूड करके देखते हैं कि व्हाट द कंक्लूजन सेज। द एथिकल, जी मैम करते हो, समझ में आ रही है? अब आ रही है आवाज। जब अपना माइक ठीक कर लेते हो फिर तुम लोग को आवाज आती है। कान से उतर जाता है, सो जाते हो, कान से उतर जाता है, फिर कहते हो आवाज नहीं आ रही। ऐसे ही है ना? इफ्रा को पूछो। ओके, ethical and legal responsibilities of nurse working in critical care areas has increased in 1990s. अब इसमें जो उन्होंने कहा है कि एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो नर्सेज क्रिटिकल एरियाज में काम कर रही है वो बढ़ गई है सिंस 1990 से। ठीक है, nurses must maintain and continually update their knowledge base and clinical competence। बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं नर्सेज इस दफा इस वक्त में, क्योंकि you can see that their education is going on a higher level। ठीक है, they are now PhDs। ठीक है, और अपने दे आर द रिसर्चर्स बन गई हैं। ठीक है, सो दे आर वर्किंग रियली हार्ड। और अभी 1990s बहुत दूर है, अभी देखो हम बहुत पीछे रह गए। हम लोग तो 20s में आ गए, 2020s में आ गए। तो अब आप खुद से देख लो इस 2020s के बाद 2025 में nurses कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी हैं। Failure to do so would not only cause harm to the patient, but would also put nurses and their employee at risk for allegation and professional negligence। ठीक है, अब अगर वो ये काम नहीं करती हैं तो वो किस काम में जाएंगी? दे विल कॉज, कोई हार्म नहीं होगा बजाय इसके इस सवाई के वो पेशेंट के लिए नर्सेस जो है वो अपने आप को उस उस जगह पे लाके खड़ी कर दी जाएगी जहाँ पे कहा जाता है कि दे डोंट नो एनीथिंग।
ठीक हो गया. So as a registered nurse working within the healthcare industry, important ये है कि you need to consider all sides of the ethical debate. जहाँ भी नर्सेस के लिए डिबेट होती हैं, जहाँ भी नर्सेस की एथिकल डिबेट्स होती हैं, वहाँ पर उसको जरूरी है नर्स वहाँ पर अच्छे लफ्जों में उसका नाम लिया जाए. ऑलवेज एक्ट विद इन द लॉ, लॉ के अंदर काम करो, एंड विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स माइंड. मरीज के जहनी लेवल पे जाके आपको बेहतर से बेहतर तरीके से काम करना. अब आप इतना हाई फाई बोलना शुरू कर दो जो मरीज के सर के ऊपर से गुजर जाए, उस बेचारे को क्या समझ में आएगा आप क्या कर रहे हो. ठीक है. सो थोड़ा सा उनके लेवल पे जाके बातचीत करो ताकि उनको भी समझ में आए कि हमारे लिए आप क्या बात कर रहे हैं. ठीक हो गया. अब कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आए, मैंने सारे कुछ रिपीट कर दिया. ये मैंने दो स्लाइड्स है जिनको मर्ज करके एक कर दिया, बजाय इसके कि मैं एक एक स्लाइड्स को करती, मैंने दो स्लाइड्स को मर्ज करके एक स्लाइड बना दिया. ठीक है. और उसके अंदर मैंने दोनों बातें डाली. हेलो, शहर अरूज किधर चली गई, इफ्रा किधर चली गई, हबीबा, वेयर आर यू हबीबा, आजकल गुम हो जाती हो, नजर नहीं आती हो, समझ में नहीं आता किधर हो. अब आप लोगों को कुछ ऐसी बात नेक्स्ट मंडे है. अभी घर जाके मैं देखती हूँ अगर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ कुछ क्वेश्चंस ताकि आप उसको हल करो. ठीक है. और फिर हम और क्वेश्चंस डालेंगे और क्वेश्चंस को हल करो. इधर ही है, किधर ही है हबीबा. सादिया प्रेजेंट है. गुड. सादिया अभी आई हो कि शुरू में आई थी. लो, सादिया तो सबसे पहले आई थी कि शहर सबसे पहले आई. शहर सबसे पहले आई थी. ठीक हो गया. आज मैंने पानी नहीं किया. मेरा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप लोगों से पूछें. हो गया. 8 स्टूडेंट्स आए हैं. वेरी गुड. 9, 10, 11, 3 अभी भी नहीं आए. ये 3 कौन से हैं जो कि हर दफा एब्सेंट हो जाते हैं. बेटा बहुत जरूरत है आप लोगों की अभी. ठीक है. और रही बात वाइवा की तो बेटा मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों से वही कुछ पूछूं जो कुछ बताया गया. ओके बेटा सर, मैं कर दूंगी. ठीक है. मैं ये कर दूंगी आप लोगों के लिए. ये जरूरी है. आई विल लेट यू नो. अभी घर जाएंगे, जाके करेंगे, और अगर आज शाम को नहीं करेंगे तो कल सुबह में मैं कर दूंगी ताकि आप लोग उसको देख के कर सकें. हो गया. अभी मैं बंद करूंगी ताकि दूसरे को मौका मिल जाए. अभी इसके बाद किसकी क्लास है कुछ पता है आईसीयू में से? बेटा आप लोगों में से भी नेक्स्ट मैं विश किया. ठीक हो गया. बिना टेस्ट का बता दें प्लीज. कल तो सर मेहदी का है. मुझे क्या है, मैं तो अपना काम करूंगी ना. फ्राइडे के फ्राइडे हमें दिया गया करने के लिए, सैटरडे के सैटरडे.
ओके, चलो। ओके बेटा, अब अपना ख्याल रखना, स्टडी करो बहुत ज़्यादा। और ये क्रिटिकल केयर की जो आप लोगों को बुक प्रोवाइड की हुई है, उसमें भी की हुई है, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ो और अपनी तैयारी जारी रखो। ठीक। तो टाइम होता है अपनी चीजें मतलब गायब नहीं होना जब तक मैं अपना स्क्रीनशॉट ना ले लूं। गायब हो जाते हैं सारे। Student became observe many environment developments because they observe it from the distance. So when the student distance learn उसको फंक्शन के बारे में पता नहीं होगा कि किससे यूज किया जाता है, फिर क्या है कि उसका कैसे यूज हो सकता है, क्या चीज़ है इसको So, as we were talking about the electronic systems, and we actually हमने पढ़ा आज का पढ़ा आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा I will thank you so much.